Okay. Question लिखो बेटा a point object is placed in air at a distance of 40 centimeter from a concave refracting surface. Of refractive index 1.5. Find the position of the image. If the radius of curvature of spherical surface is 10 centimeter. Spherical surface is 10 centimeter. 1.
बेटा क्वेश्चन पढ़ो क्या? A point of reference is here at a distance of 1 centimeter from a effective surface of material of effective 1.5. Find the position of the image if the radius of the image is 5 centimeter. कितना? ठीक है। देखो बेटा सबसे पहले ऑब्जेक्ट एयर के अंदर पड़ा पर कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो क्या है इसका सिंपली समथिंग लाइक दिस कनकेव और ऑब्जेक्ट एयर के अंदर पड़ा आई थिंक सो दिस इज द फर्स्ट केस जो हमने वहां पर बनाया दिस इज n1 एंड दिस इज n2 तो अब मुझे एक बात बताओ ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर पड़ा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर ये बस क्लियर हो गई क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने रेयर साइड पर रखा है यहाँ पर रखा लेफ्ट साइड पर ओके एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r माइनस क्योंकि इसका सेंटर लेफ्ट साइड पर होगा वेरी गुड तो r इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर ये बात सभी को समझ में आती है बेटा और कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ऑब्जेक्ट एयर के अंदर पड़ा है हमने ये भी लिख दिया और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1 अब देखो फॉर्मूला क्या है दैट इज माइनस ऑफ n1 upon u प्लस n2 upon v इज इक्वल्स टू n2 minus n1 upon r ये तो फॉर्मूला सभी को क्लियर है कैसे लिखा इससे पहले लिखने सिखाया गया अब बेटा n1 की वैल्यू कितनी है 1 u की वैल्यू कितनी है -40 फॉर्मूले का अब ये नहीं बोलना सर माइनस पहले लगा हुआ इसलिए मैंने माइनस लगाया है ठीक है अपनी तरफ से लगाना है -40 प्लस n2 का वैल्यू कितना है 1.5 अपॉन v का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 1.5 minus 1 0.5 अपॉन r r का वैल्यू कितना है -10 इसको सॉल्विंग कर सकते हैं सॉल्विंग करके बेटा आपके पास जो v की वैल्यू आएगी v will be equals to -20 सेंटीमीटर अच्छा बेटा -20 सेंटीमीटर का मतलब पता क्या हुआ इमेज लेफ्ट साइड पर बनी है ठीक है बेटा ये डन राइट ऑन द क्वेश्चन if an object lies if an object lies at a distance of 20 centimeters if an object lies at a distance of 20 centimeters from the convex surface radius 10 centimeter in the rear medium then find the position of the image formed refractive index of denser medium is 2 refractive index of denser medium is 2 and rare medium is 1 rare medium is 1
हाँ जी बेटा, यहाँ पर देखते हैं। हाँ, सब लोग क्वेश्चन पढ़ना है। An object lies at a distance of 20 centimeters from the convex surface of radius 10 centimeters. Then find the position of the manifold. In the rear medium, Take the next of tensor medium to the rear medium. हाँ बेटा देखो, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, कन्वेक्स सरफेस है, कन्वेक्स सरफेस और ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है? रेयर मीडियम। तो कहने से सर यही सरफेस बनेगा, देखो कन्वेक्स, कन्वेक्स और ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रहा है? रेयर मीडियम। तो ये वाला केस बन गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, n1 की वैल्यू कितनी है? 1। n2 की वैल्यू कितनी है? 2। q की वैल्यू कितनी आएगी? -20। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल फिल्टर से लेफ्ट साइड पे होगा। और यहाँ पर बेटा अगर मैं r की बात करूंगा, इसका सेंटर कहाँ पर लाई करेगा? राइट साइड पर लाई करेगा। तो इट इज प्लस है। आज मुझे सभी को वैल्यू क्लियर है। तो इसके बाद आपको बेटा सिंपली दैट इज -1 बाय -20 प्लस 2 बाय is equals to 1 by upon plus 10 upon 10। यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v। v का वैल्यू कितना आ रहा है? 40। इट इज 40 हाँ माइनस 40 प्लस 40 ठीक है। पेपर में ऐसे लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को? राइट। विद दिस बेटा वी हैव कंप्लीटेड रिफ्लेक्शन टू द कर्व सरफेस। सुन लो। तो बेसिकली बेटा देखो, ये एक बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, इसके क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है, घर जाकर इसके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना कर्व सरफेस के। देखो हर रोज के हम यहाँ एक टॉपिक कवर कर रहे हैं या 2 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो अगर आप साथ के साथ कर रहे हो तो आपको बिल्कुल रिलैक्स वे से ना आपकी आराम से प्लस 6 निकल जाएगी, अगर घर जाकर साथ के साथ कर रहे हो तो। ठीक है, अब जैसे कर्व सरफेस है, रिफ्लेक्शन किया हमने, लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करना है। तो या तो वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। अभी हमने जैसे 2 क्वेश्चन किए हैं वो रेयर से डेंसर वाले के लिए। घर जाकर अगर आप सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आपका सॉल्विंग हो जाएगा। अभी देखो आज मैं देख रहा हूँ कि अगर आपने ध्यान से समझा, क्लास में ध्यान आप सभी का ज्यादा था, आज नॉइज भी कम थी, तो आपसे क्वेश्चन सॉल्विंग हो गई, क्वेश्चन के आंसर आ रहे थे, है ना। और दूसरा, अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कल आपकी छुट्टी है, ठीक है, वी विल मीट ऑन मंडे, और मंडे विल स्टार्ट विद लेंसेस। ठीक है, अब बेटा हमारे पास लेंस के अंदर बेसिकली क्या होता है? लेंस इज अ फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। लेंस वर्क्स ऑन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। लेंस के अंदर लाइट कहां से कहां पर ट्रेवल करती है? फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंड देन डेंसर टू रेयर। ठीक है, यहाँ पर 2 कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला।
क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है, इसके बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, बट आने से पहले बेटा ठीक है 2 दिन है आपके पास, टाइम को वेस्ट मत करना, प्रीवियस ईयर सॉल्विंग आपकी काफी पड़ी है, सॉल्विंग करना बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा।